My dear students, today I am standing here that we should learn debate writing. So today's topic is debate writing. So before all, we must know that what is a debate. Debate is a formal discussion of subjects before a public assembly. One group speaks in favor of the motion and other against the motion. The purpose of debate is to show skill and ability in arguing. And after that, we must know about what are the points to be remembered while writing a debate. Which points should we remember while we are writing a debate? But before that, if you haven't subscribed to this channel, please subscribe it and push the bell icon so that you can get the notifications of my new videos in right time. अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। सो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। फर्स्ट point is debate should always have an impressive introduction to grab the attention of the audience. इंट्रोडक्शन जो डिबेट का होना चाहिए वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि पब्लिक का अटेंशन जो है तुरंत स्पीकर को मिल जाए। सेकेंड, प्रिपेयर द डिबेट प्रॉपरली आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। डिबेट का प्रिपरेशन जब भी आप करिए तो हमेशा सबसे पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं टॉपिक के, उन दोनों को दिमाग में रखिए। थर्ड, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन आउटलाइन द मेन पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू राइट। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है उससे आपको एक आउटलाइन तैयार कर लेना होता है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, तो किस आउटलाइन के बारे में आपको लिखना है। Now format of a debate. Very first, catchy introduction must be there. Formal address to audience, एक औपचारिक संबोधन ऑडियंस के नाम होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसको विकसित कीजिए बोलने के लिए। एडवर्स इफेक्ट्स, इफ द टॉपिक इज ए प्रॉब्लम, यू आर स्पीकिंग और यू आर आर्ग्यूइंग ऑन ए टॉपिक विच इज ए प्रॉब्लम, देन व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स, and conclusion after that, and at last formal thanks to the audience. So it must be there that you should thank the audience at last. Now we take a question. Here is a question: brain drain is not a bane for a developing country like India. Write a debate in 150 to 200 words. आइदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन। जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं वो दूसरे देशों में चली जाती हैं, ये इस देश के लिए अभिशाप नहीं है। ये टॉपिक मिला है आपको और इस टॉपिक पर आपको 150 टू 200 वर्ड्स में डिबेट लिखना है, या तो फेवर ऑफ द मोशन या अगेंस्ट द मोशन। सो हियर इज द आंसर। वेरी फर्स्ट वी विल राइट फॉर द मोशन. So here is written, worthy chairperson, secretary and dear students. Today I, Anil, stand before you to speak for the motion, brain drain is not a bane for a developing country like India. We all are aware that India is taking advantage of its demographic dividend to develop its economy faster than other countries. The term demographic dividend is freeing up of resources for a country's economic development as it switches from an agrarian to an industrial economy. Here 2-3 words are difficult, like demographic dividend मीन जो जनसंख्या का आधार है भारत का, जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या भारत की है, उसका इंडिया जो है हमेशा एडवांटेज लेना चाहता है, जिससे कि उसकी इकोनॉमी जो है वो इस जनसंख्या के बल पे विकसित हो पाए। So here it is written, we all are aware that India is taking advantage of its demographic dividend
टू डेवलप इट्स इकोनॉमी फास्टर देन अदर कंट्री, जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ के तुलना में हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से विकसित हो सके। हियर द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड इज़ द फ्रीइंग अप ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्म यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो जन संसाधन हैं, जो मानव संसाधन हैं, उसको फ्री किया जाए, जिससे कि और देशों में वो जा करके और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएँ। सो हियर वी आर डेवलपिंग आवर टॉपिक ऑफ द डिबेट। दिस may last 20-30 years. Initially, fertility rate fall, leading to a labor force that is temporarily growing faster than the population dependent on it. All else being equal, per capita income grows more rapidly during this time too. From India, many people migrate abroad for better prospects, and here a growing labor force provides adequate replacements. In fact, this so-called brain drain improves the chances of competent people finding employment. Otherwise, they would either be underemployed or totally unemployed. Thus, we can definitely say that brain drain is not a bane for a developing country like India. And at last, thank you. Now we will see the other side of the debate, that is against the motion. Worthy Chairperson, Secretary and dear students, today I Anil stand before you to speak against the motion brain drain is not a bane for a developing country like India. What is brain drain? It is defined as the migration of competent people, meaning intellectuals and skilled workers in search of a better standard of living and quality of life, higher salaries, access to advanced technology, and more stable political conditions in different places worldwide. Usually it is the intellectuals and skilled workers of a country who migrate being dissatisfied the most. This translates into a loss of considerable resources when these people migrate, with the direct benefit accruing to the recipient countries who have not spent any money on educating them. These migrants are some of the most expensive resources of a developing country like India, because their training in terms of material cost and time, and most importantly because of lost opportunity. And now we will conclude this debate. Thus, India's development is severely hampered by these people leaving the country, particularly because it results in many gaps in vital industries and key positions. This significantly hampers development of the nation. Thus, we can definitely say that brain drain is a bane for a developing country like India. And at last, thank you. So this way we can draft our debates which we can speak in a public meeting. So thank you very much.